Hello friends, welcome to my channel. आजिर वीडियो रे आमे कंप्यूटर शॉर्टकट उपरे 30 MCQ करिवा एग्जाम पर्सपेक्टिव एटा इंपोर्टेंट रहबो. First questions: What is the shortcut key to insert a new slide in Microsoft PowerPoint? Control M, Control N, Control Enter, Alt N. आयर करेक्ट आंसर टी होची Control M. कंट्रोल एन टा कोन एटा न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करे हेले जदी गोटे स्लाइड एंटर करिवार अछि न्यू स्लाइड ताले हम कंट्रोल एम प्रेस करो. नेक्स्ट क्वेश्चंस: व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल रे न्यू वर्कबुक क्रिएट करिया पे कोन शॉर्टकट कीज यूज हुए? अरे करेक्ट आंसर टा होसी कंट्रोल एन. नेक्स्ट क्वेश्चंस: In MS Word, which shortcut key is used to justify the text? MS Word रे justify पे कौन की यूज करावे? Control plus J, Control plus E, Control plus L, Control plus R. यार करेक्ट आंसर टा होसी Control J. Justification पे हमें Control plus J यूज करो. Next questions: What is the shortcut key to rename a selected file or folder in Windows? Windows रे गोटे फाइल को रीनेम करिया पे किंबा फोल्डर को रीनेम करिया पे कोन शॉर्टकट की यूज हुए? कंट्रोल प्लस आर, F2, शिफ्ट प्लस F10, ऑल्ट प्लस F2. आयर करेक्ट आंसर टा होसी F2 की प्रेस करके हमें कौन सी फाइल किंबा फोल्डर रा ना को चेंज करि परबा, रीनेम करि परबा. नेक्स्ट क्वेश्चंस: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडो? विंडो रे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करया पे हमको शॉर्टकट कीज यूज करो. कंट्रोल आर, शिफ्ट आर, ऑल्ट आर, विंडोज की प्लस आर. यार करेक्ट आंसर टा होची विंडोज की प्लस आर. नेक्स्ट क्वेश्चंस: व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल डू इन एमएस वर्ड? कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करले हमर कोन हुए एमएस वर्ड रे? ऑप्शन सब अप्लाइज बुलेट, इंसर्ट्स हाइपरलिंक, ऐड कमेंट और लॉन्चेस स्पेल चेक. हम जदी कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करिबा ताले एटा बुलेट अप्लाई हबो. तो करेक्ट आंसर इज इट अप्लाइज बुलेट. नेक्स्ट: व्हिच शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट डेट इन एमएस एक्सेल? करंट डेट यूज करिया पे हमें कोन शॉर्टकट की यूज करो? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट डी. आयर करेक्ट आंसर टा होची कंट्रोल सेमीकोलन. डेट पे हमें कंट्रोल सेमीकोलन यूज करो और टाइम पे हमें कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन. एटी डेट आसीबो और एटी टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चंस: व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एस्केप इन विंडोज? विंडोज रे हम जदी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस करिवा ताले कोन हबो? ओपन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली, ओपन स्टार्ट मेनू और ओपन सेटिंग्स. यार करेक्ट आंसर होची ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली. हम जदी कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करिवा ताले टास्क मैनेजर डायरेक्टली ओपन हबो. नेक्स्ट क्वेश्चंस: व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज? विंडोज रे जेते सब ओपन ऐप सब होई दिवो गोटे ऐप रो अन्य गोटे ऐप जिया पे कोन शॉर्टकट कीज हम यूज करिवा? ऑल्ट एस्केप, कंट्रोल टैब, ऑल्ट टैब और विंडोज टैब. अरे करेक्ट आंसर टा होसी ऑल्ट टैब. ऑल्ट टैब द्वारा हमें ओपन थिबा ऐप सब गोटे जगह गोटे अन्य गोटे ऐप को जाय परिवा. क्वेश्चन नंबर 10: इन एमएस वर्ड व्हाट डज कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन डू? हम जदी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को एकाथरे को प्रेस करबा एमएस वर्ड रे ताले कोन हबो? इट इंक्रीजेस द फॉन्ट साइज, इंक्रीजेस इंडेंट, ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर और मूव्स कर्सर टू द एंड. आयर करेक्ट आंसर टा होसी इंक्रीज फॉन्ट साइज. हम जदी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करिया फॉन्ट साइज टा इंक्रीज हबो और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करले फॉन्ट साइज टा कमी जिवो. Question number 11: What does Ctrl plus D do in MS Word? Ctrl plus D MS Word रे हम जदी Ctrl plus D प्रेस करछु कोन हबो? डबल अंडरलाइन टेक्स्ट,
open font dialog box, delete line, duplicate text. our correct answer टा होसी हम जदि ctrl+D प्रेस करिवा ताले open font dialog box font dialog box open हबो. Next question number 12. Which shortcut key is used to insert hyperlink in MS Office? MS Office रे हमें जदि hyperlink add करवा को चाहूँ को shortcut keys use हबो. ctrl+K, ctrl+H, alt+K, ctrl+shift+H. our correct answer टा होसी ctrl+K. जे कौन से अगर hyperlink पाए हमें ctrl+K use करो. Question number 13. What is the function of Ctrl+Alt+Delete in Windows? Windows रे Ctrl+Alt और Delete को प्रेस करले कौन हुए? Restart the system, lock screen, open task manager और security options और log off. Ctrl+Alt+Delete प्रेस करले कौन हुए? Ctrl+Alt+Delete प्रेस करले open task manager और security options. एटा होची correct answers. Question number 14. Which key combination toggles between absolute and relative references in MS Excel? MS Excel रे कौन की द्वारा हमें absolute और relative reference को जाई परिवा. आयर ऑप्शन सब वाला Alt F4, Control F, F4 और Shift F4. आयर करेक्ट आंसर टा होची F4. F4 प्रेस करके we can toggle between absolute and relative references. Question number 15. What does Alt-Shift-Tab do in Windows? Windows रे Alt-Shift-Tab को एकाथर को प्रेस करले कौन हबो? Closes tab, moves to previous app, opens previous file, switch between desktop. और correct answer टा होची moves to previous app. Alt-Shift-Tab, Alt-Tab जदि हमें आगे को जाओ सो Alt-Shift-Tab तो previous app को जिया. Question number 16. Which shortcut is used to insert a new comment in Excel? Excel रे new comment add करया पाए कौन shortcut keys use हुए? Ctrl+Shift+C, Shift F2, Ctrl+M, Ctrl+Shift+F2. यार correct answer टा होची Shift F2. यार correct answer टा होची option B, Shift F2. Shift F2 press कले और new comment हमें insert कर पारे. Question number 17. What is the shortcut for print preview in MS Word? MS Word रे print preview रो shortcut कौन? ऑप्शन सब वाला Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+F2, Alt+P. आयर करेक्ट आंसर टा होची Ctrl+F2. Ctrl+F2 रे हमें print preview देखि परिबा. Question number 18. In MS Word, which shortcut key is used to copy formatting? Formatting को जदि copy करिवार अछि हमें ताले कौन प्रेस करिवा MS Word पाए? Ctrl+C, Ctrl+Shift+C, Alt+C और Shift+C. Ctrl+C तो हमें समझते जानछो एटा copy हुए और एठी copy formatting कहिसी. तो copy formatting पाए हमें कौन करू? Ctrl+Shift+C कले हमें formatting को भी copy करिवार. So correct answer होसी Ctrl+Shift+C. Question number 19. Which shortcut key is used to lock your PC in Windows? Windows रे PC को lock करया पे कौन shortcut keys use हुए? Ctrl+L, Windows L, Alt L, Ctrl+Shift+L. और correct answer टा होची Windows L. Windows L को जदि हम प्रेस करबा ताले सिस्टम टा लॉक हे जिवो. Question number 20. In MS Excel, what does Ctrl+Shift+ do? Ctrl+Shift और plus को हमें जदि simultaneously press करिवा ताले कौन हबो? Option A opens a new tab, Option B inserts a new row or column, Option C adds formula, or Option D highlights cells. Ctrl+Shift+ press कले हमें new row किंबा column add है जिवो. ताले आयर आंसर टा होची B. Insert से new row or column. Question number 21. In MS Word, Ctrl+Shift+N is used to.
कंट्रोल शिफ्ट आउ एन को आम यूज कले कौन हम इन वर्ड रे ऑप्शन सब है क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ अप्लाई नॉर्मल स्टाइल ऑप्शन सी सेव एज न्यू ऑप्शन डी होची क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट यार करेक्ट आंसर टा होची अप्लाई नॉर्मल स्टाइल हम जदि कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करबा ताले नॉर्मल स्टाइल अप्लाई हो क्वेश्चन नंबर 23 शॉर्टकट की टू इंक्रीज इंडेंट इन एमएस वर्ड रे इंडेंट को इंक्रीज करा पे कौन शॉर्टकट की यूज हुए कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल प्लस टैब शिफ्ट प्लस टैब ऑल्ट प्लस टैब और यार करेक्ट आंसर टा होची कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल एम आम जदि प्रेस करबा ताले इंक्रीज टा इंडेंट टा इंक्रीज हो क्वेश्चन नंबर 24 शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल रे जदि गोटे न्यू वर्कशीट ऐड करिवार अछि ताले तार शॉर्ट फॉर्म कोन शॉर्टकट टा कोन ऑप्शन सब होला ऑल शिफ्ट एन ऑप्शन बी शिफ्ट F11 कंट्रोल शिफ्ट F11 ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट एन आर करेक्ट आंसर टा होची शिफ्ट F11 जदि प्रेस करियो नोआ वर्कशीट टा ऐड हे जिवो क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट डज कंट्रोल प्लस स्पेस बार डू इन एमएस वर्ड रे हम जदि कंट्रोल और स्पेस बार को साइमल्टेनियसली प्रेस करिवा कोन हबो ऑप्शन ए सिलेक्ट होल पैराग्राफ रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट और चेंज फॉन्ट यदि कंट्रोल स्पेस बार तम प्रेस करूछ ताले कोन हबो इट रिमूव्स कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द शॉर्टकट टू मैक्सिमाइज ए विंडो इन विंडोज रे जे कोन से विंडो को मैक्सिमाइज करबा पे कोन यूज हुए ऑप्शन सब है विंडोज अप एरो कंट्रोल प्लस एम ऑल्ट प्लस एंटर आउ शिफ्ट प्लस एम और यार करेक्ट आंसर टा होची विंडोज प्लस अप एरो जदि विंडोज प्लस अप एरो मारिबा ताले मैं जो विंडो मिनिमाइज हेतो ताको हम मैक्सिमाइज करि परिबा क्वेश्चन नंबर 27 शॉर्टकट टू इंसर्ट फंक्शन इन एक्सेल रे फंक्शन को इंसर्ट करबा पे तार शॉर्टकट कीज कोन ऑप्शन सब होला ऑल्ट एफ शिफ्ट F3 कंट्रोल F3 और ऑप्शन डी टा होची ऑल्ट शिफ्ट F3 और यार करेक्ट आंसर टा होची शिफ्ट F3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जदि शिफ्ट F3 प्रेस करबा कोन से सेल रे रखी ताले हमको फंक्शन सब आसीबो जो फंक्शन हमको यूज करबार अछि हम यूज करिया क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच शॉर्टकट ओपन्स द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज रे फाइल एक्सप्लोरर कोन शॉर्टकट किस द्वारा ओपन हे पारिबो हम जदि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करबा को चाहू ताले कोन शॉर्टकट की जा प्रेस करिबा ऑप्शन सब होला विंडोज ई कंट्रोल ई ऑल्ट ई एंड शिफ्ट ई आर करेक्ट आंसर टा होची विंडोज ई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जदि विंडोज प्लस ई प्रेस करिबा ताले फाइल एक्सप्लोरर ओपन हबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इन एमएस एक्सेल व्हाट डज कंट्रोल प्लस 1 डू कंट्रोल प्लस 1 को जदि हम प्रेस करछु कोन हबो एमएस एक्सेल रे फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इंसर्ट चार्ट क्रिएट फॉर्मूला और ऐड शीट कंट्रोल प्लस 1 प्रेस कले कोन हबो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स टा ओपन हबो तो करेक्ट आंसर टा होची ऑप्शन ए फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्लोज एन एक्टिव विंडो गोटे एक्टिव विंडो को क्लोज करबा पे कोन प्रेस करा हुए ऑप्शंस ए होची कंट्रोल W ऑप्शन बी ऑल्ट F4 ऑप्शन सी कंट्रोल F4 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर टा होची ऑल ऑफ द अबव हमें ये कंट्रोल W द्वारा भी मन क्लोज कर पाए ऑल्ट F4 रे भी क्लोज हो कंट्रोल F4 रे भी क्लोज हो